Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the difference between spore and cyst. So let's move to the classboard. So dear students, bacterial cell structure. So in bacterial cell structure, we have discussed flagella and pili, then the slime, capsule, cell wall, cell membrane, and the nucleoid region, and the ribosomes, and mesosomes, and plasmids, and storage granules, so all these structures of the bacteria have been discussed. Only two structures are remaining, which is number one. So we are going to study these last two structures in comparison form. Okay? The spore and cyst. So this is also important regarding short question point of view. What is the difference between bacterial spore and cyst? Clear? So here we are talking about the bacterial spore and cyst. Remember this thing very clearly. So dear students, spore नाम आपने सुना, grade 9th और 10th में भी आपने ये words पढ़े थे, spore and cyst formation. So spores, they are thick and dormant structures which are formed during unfavorable conditions. Unfavorable conditions. Clear? While the cyst, they are also thick, walled, and dormant structures which are formed during adverse environmental conditions. दोनों ही
अनफेवरेबल और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में बनती हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स बनवा लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट ये यानी कि बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती है। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस कि स्पोर कब बनेगी और सिस्ट कब बनेगी, ये आपने ज़रूर जहन में रखना है। इसको एमसीक्यू के लिए भी मार्क कर लें। द स्पोर इज फॉर्म्ड during the late stage of growth। ये अहम तरीन पॉइंट है इस टॉपिक में स्पोर के हवाले से। जबकि जो सिस्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द differentiation of the vegetative cell। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ये एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पेसिफिक फंक्शन किसी भी सेल को मिल जाता है और फर्दर वो डिवाइड नहीं कर सकता और एक स्पेसिफिक फंक्शन के साथ सामने आता है। तो जब ये डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है बैक्टीरियल सेल्स की शेप के अकॉर्डिंगली, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, तो उस वक्त अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स हो जाएं तो तब कुछ बैक्टीरिया जो है वो सिस्ट बनवा लेते हैं, ठीक है। और वो इसमें टर्म है वेजिटेटिव गैड, वेजिटेटिव सेल। सो वेजिटेटिव सेल कहते हैं ग्रोइंग सेल को, जो अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रोथ चल रही है। इसी तरह से स्पोर है, ये जो ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं आगे चलकर हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, द लैग फेज एंड द लॉग फेज एंड द स्टेशनरी फेज एंड द डिक्लाइन फेज और डेथ फेज। तो जो लेट स्टेजेस होती हैं अगर उनमें एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स होना शुरू हो जाएं, वो फेवरेबल ना रहें, तो तब कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो स्पोर बनवा लेते हैं, ठीक है। आमतौर पर ये स्टूडेंट्स जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो ये बर्दाश्त कर सकते हैं उसमें भी डिफरेंस है। The spore forming bacteria can tolerate pH extremes, intensities of light and high temperature, and also desiccation। तो ये मुख्तलिफ तरह के and certain chemicals agents, तो मुख्तलिफ तरह के कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो उनके प्रेशर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। सो पीएच अगर एक्सट्रीम्स हो जाएं तो तब भी जो है ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इसको टॉलरेट कर सकते हैं। अगर लाइट की इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन आ रही है तो तब भी जो है ये इसको टॉलरेट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर को भी जो है वो यानी कि एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर हाई जो होती हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में भी ये अपने आप को बचत कर लेते हैं, मतलब कि अपने आप को डेड होने से बचा लेते हैं बाय फॉर्मिंग द स्पोर। और इसी तरह से दे कैन ऑल्सो टॉलरेट द डेजिकेशन, यानी कि अपने सेल से मॉइस्चर के रिमूवल को, वाटर के रिमूवल को बचा सकते हैं बाय फॉर्मिंग द स्पोर्स, एंड ऑल्सो दे कैन टॉलरेट सर्टन केमिकल्स। जबकि जो सिस्ट है, सिस्ट कैन टॉलरेट the cyst forming bacteria can only tolerate desiccation।
and they are not heat resistant. They are not heat resistant. ये heat को resist नहीं कर सकते. तो ये 3 बेसिक डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं इनके दरम्यान में. एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पर हम मेंशन करेंगे. Here is तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे स्पोर को and over here cyst. So as far as spore forming bacteria are concerned, there are 2 types of spores which can be formed by the spore forming bacteria. Spores are of 2 types. ये 2 types की होती हैं. ठीक है. Number 1, endospore, which is formed within the cell, cell के अंदर बनेगी. And number 2 is the exospore, which is formed outside the cell. The bacterial cell. Yeah. And as far as cyst is concerned, so there are no further types of cysts. Usually, there are no further types of cyst usually. Yeah. So that is the basic difference between these two. It can be asked in the short questions. अब थोड़ा सा concept मज़ीद clear करेंगे regarding the endospore and exospore. थोड़ा सा a little bit concept. Being a medical student, we have to the clear-cut picture of everything. Okay. So now the endospore and exospore. So as far as endospore is concerned, the spore which is formed, जी dear students, कहाँ पर बनेगी? Which is formed, endo means inside, which is formed within the cell or inside the cell. सेल के अंदर बनेगी. लेकिन कौन सा सेल के? बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया. Inside the bacterial cell. And the spore which is formed exit से ex से याद रखेंगे outside. ठीक है. Which is formed outside the cell. Outside the
bacterial cell is called exospore. It's called endospore. Clear? So that is a single difference between their endospore and exospore. There are another differences. So endospore, it is not formed by cell division. यहाँ पर सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि एक्सोस्पोर इट इज फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन. यहाँ पर सेल डिवीजन होगी बैक्टीरियल सेल में तो उसके बाहर बनेगी एक्सोस्पोर. अभी आगे डायग्राम में भी आपसे क्लेरिफाई करूँगा इसको. और देन the endospore is released by the rupturing of cell. जो है वो एंडोस्पोर जो है वो जब बैक्टीरियल सेल रप्चर करेगा तो उस तब वो रिलीज हो जाएगी, जबकि द एक्सोस्पोर इज रिलीज्ड बाय बडिंग. तो ये जब बड बनेगी, क्योंकि बनती ही बाहर है, सो ये बडिंग के जरिए रिलीज होगी एक्सोस्पोर. क्लियर? सो हियर आर द डायग्राम्स. So this is a bacteria which has undergone and here is the genetic material और इसके ऊपर यहाँ पर अंदर वाले साइड पे बनेगी the endospore. इस तरह से, ठीक है. जबकि एक्सोस्पोर, as I told you, it is formed by cell division. यहाँ पर बाकायदा तौर पर सेल डिवीजन होगी और here is the genetic material और बाहर बनेगी इस तरह से. So this is exospore. Clear? This is endospore and this one is exospore. तो जब ये बैक्टीरियल सेल रप्चर करेगा, when it is ruptured, the endospore is released. And it can now germinate into another cell, another bacterial cell. So this is how. जबकि यहाँ पर जो पेरेंट बैक्टीरियल सेल है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, मीन्स के वो एज इट इज़ रहेगा, जबकि जो एक्सोस्पोर है वो बडिंग के ज़रिए वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी लाइक दिस. सो इट हैज़ बीन डिटैच्ड. चूँकि ये सेल डिवीजन से बनी थी और ये अलहदा से इसके पास अपना मटेरियल है, यहाँ पर भी अपना मटेरियल उसके पास मौजूद था, सेल डिवीजन थी तो उससे पहले रेप्लिकेशन हो चुकी थी इनकी डीएनए की या क्रोमोसोम की.
So this is how it is budded off. तो यहाँ पर रप्चर हो रहा है, यहाँ पर जो है वो बडिंग हो रही है. And as far as the examples are concerned, so in case of angiosperms, examples include Clostridium, tetany, it's a scientific name here. And as far as the exospore is concerned, the conidiospores, आगे चलकर पढ़ेंगे हम conidiospores and the actinobacteria. Clear? So these are the bacteria which form the exospores. So another diagram is here, which is for the cyst forming bacteria. So here is a bacterium. And having its genetic material, and the cyst will be formed in this way. A thick dormant structure is there, a thick wall structure, single structure. तो इसमें आमतौर पर दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर. सो इनर वाली लेयर एक्चुअली इसको अच्छा वो प्रोटेक्ट कर रही होती है. सो दैट इज बेसिकली द सिस्ट. दैट इज सिस्ट. These are the layers of the cyst. और जब तक ऐसा रहेगा, जब तक के कंडीशंस जो हैं वो अनफेवरेबल हैं, as soon as the favorable conditions are arrived, तो ये जो cyst है ये ब्रेक करेगी and it can germinate. इसी तरह से यानी कि it can grow. इस तरह से जो सी ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ये भी इस तरह से जैसे ही जो अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी ये ख़त्म हो जाएंगी. सो these can germinate into vegetative cells. और ये स्पोर रिलीज हो रही है, यहाँ पर बडिंग हो रही है एंड दे आर रेडी टू फॉर्म द न्यू बैक्टीरिया. और याद रखेंगे आगे चलकर वैसे तो हमने डिस्कस भी करना है इनके अंदर जो किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है. सो चूँकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और उसमें भी आम तौर पर जो होता है यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द बाइनरी फिशन, यानी बाइनरी फिशन के ज़रिए जो है वो डिवाइड करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.